Welcome back to India Voyage और आई एम वेटिंग फॉर पीपल टू ज्वाइन. वैसे जो लोग ज्वाइन करने वाले हैं दे ऑल नो द रीज़न कि हम यहाँ पर क्यों हैं. वी आर हियर बिकॉज आज हुआ है मई 2021 इशू लॉन्च. कुछ अपडेट्स देना चाहूँगा. बहुत सारे लोग जो इंडिया वॉयज को रेगुलरली फॉलो करते हैं दे कीप ऑन टेक्सटिंग अस कि हम लोग फ्रीक्वेंटली या बहुत सारा कंटेंट क्यों नहीं डाल रहे हैं अपने पेजेस पर. रीज़न बीइंग आप सबको सिचुएशन का अंदाज़ा है एंड हम लोग उससे बचे नहीं हैं. हमारी टीम तक कोविड आ गया था एंड सारी चीज़ें हिल गई हैं. ट्रैवल तो ऑब्वियसली पॉसिबल हो ही नहीं पा रहा है. सो वी आर नॉट ट्रैवलिंग एंड इसलिए हमने सोचा कि वी कैन नॉट इवन एनकरेज ट्रैवल राइट नाउ. सो वी आर नॉट पोस्टिंग अ लॉट अबाउट ट्रैवल. बहुत ही जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ होती है, जैसे कोविड हेल्पलाइन से रिलेटेड जो भी चीज़ें थी हमने शेयर करी एंड उसी तरीके का कुछ करने की प्लानिंग चल रही है. And live was supposed to happen at 4, but Ritvik is running late, so I just received a text that he'll be joining in 5 minutes. तो मैंने सोचा तब तक मैं आप लोगों से बात कर लूँ. आप लोग मुझे कुछ क्वेश्चंस भेज सकते हैं अगर ऋत्विक से कुछ पूछना हो, कुछ इंडिया वॉयज के लिए भी हो. और उसी के साथ वी आर गोइंग टू ऐड ए सेक्शन ऑफ हेल्प इन इंडिया वॉयज ऑल्सो हमारी वेबसाइट पर, जहाँ पे वी विल बी प्रोवाइडिंग एंड वी विल बी टॉकिंग अबाउट ऑल द थिंग्स दैट इज हैपनिंग अराउंड. वी आर नॉट उतना बड़ा वेंचर के हम अभी कुछ हेल्प कर पाएँ या किसी भी चीज़ से फाइनेंशियली, या बहुत बड़ी टीम नहीं है हमारे पास जो हम आगे आके इतनी बड़ी पेंडेमिक जो चल रहा है उसमें कुछ भी कर पाएँ. बट हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है. दैट डजंट मीन कि हमारी जो आत्मविश्वास है वो कम हो जाएगा. सो या वी आर ट्राइंग कि हम जो भी अच्छी चीज़ें कर पाएँ, जितनी भी हेल्प कर पाएँ अपने एंड से, जो हमारे क्रिएटिव रेडियस में है, जो हमारे जितने भी पॉसिबल रिसोर्सेज हैं उनके थ्रू हम कर सकते हैं. सो वी आर ट्राइंग टू डू दैट. और उसी के साथ आई डोंट नो कि ट्रैवल आप लोगों को फैंसी कर रहा है इस टाइम पर कि नहीं. बस मेरी उम्मीद है कि आप सब लोग सही हों, अच्छे से हों, सेफ हों और अपने घर पर ही रहें और अपना ध्यान रखें और इंडिया वॉयज पढ़ें, क्योंकि हमने ट्रैवल की बहुत सारी बातें करी हैं. ट्रैवल बजट और ट्रैवल ब्लॉगर्स कैसे अभी टाइम काट रहे हैं अपना लॉकडाउन में, और भी सारी चीज़ें हैं. सो डू नॉट फॉरगेट टू रीड एंड आपको उसके लिए सब्सक्राइब करना पड़ेगा. सब्सक्राइब करने के लिए लिंक बायो में डला हुआ है, आप जा सकते हैं. आप सब्सक्राइब करिए अगर आपने नहीं किया हो तो, और अपने रिव्यूज़ भी लिखिए मैगजीन पढ़ने के बाद. आई एम श्योर कि आप लोगों को अच्छा लगेगा कि हम लोग कितनी मेहनत करके कुछ ना कुछ हमेशा अच्छा लाते रहते हैं. एंड इस टाइम पर व्हेन नेगेटिविटी इज स्प्रेड ऑल अराउंड, उसके बाद भी हम लोग कुछ अच्छा कर रहे हैं और अच्छा कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं. ताकि So Ritvik needs no introduction. He's one of our favorite actors and we are watching him for so many years now in reality shows, in TV serials, all around. So I'll just see if he's available, so I'll add him. And आपके जो भी questions हो ऋत्विक से, please go on because he's coming here and हम लोग बहुत जल्दी वाइंड अप करेंगे. सो प्लीज जल्दी जल्दी अपने सवाल पूछ लेना. हाय ऋत्विक. What's up, my friend? एक सेकंड यार, उसको थोड़ा सा सेट करने दो मुझे. हाँ जी, ये कहाँ मैं भी. Okay. Yeah. Am I visible properly? Okay. Yeah, you are visible like now. यार एक तो ये हाँ. दो लोग आ जाते हैं स्क्रीन पे तो ये प्रॉब्लम होती है. Hi. Yeah. Hi Ritvik, am I audible? Yes, you're audible. First of all, thank you so much from all our team, from all the Voyagers for coming on board with us. And ये वाला इशू थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गया था because of the situation, but हमने उसको finally achieve किया and we are talking about the memories of travel because अभी travel possible नहीं है. So only on travel. Yeah. And you are just looking fabulous. I mean, you justified the cover and it is looking stunning. I'm just kidding. What's up? Thank you. Yeah, so मैं personally कुछ बोलना चाहूँगा that मैंने सबसे ज़्यादा I followed you on खतरों का खिलाड़ी and I loved it because you used to have a lot of fun there. बाकी सब लोग टास्क वगैरह करते थे but you had that element of yours and so that I could connect with you. So yeah. I see. So पीछे भी गिटार पड़ा हुआ है. You play music, do you? Yes, I do.
I play guitar. I was in college when I was in college. So अभी बस अपने लिए ही थोड़ा बहुत time निकाल के. And I Interesting. know that you are also into music. हाँ यार, So मेरा yeah, मेरा सबसे मेरा मेरा पूरा सेटअप इज राइट हियर। ये मेरे फ्लूट यहाँ पे हैं, oh wow wow wow. मैंने अब पियानो पे रखा हुआ है मेरा फोन। सो या दिस इज द ओनली थिंग दैट आई अरे एम सही. डूइंग द लॉकडाउन मैन। दिस इज द ओनली थिंग दैट यू कैन डू। Amazing amazing. Yeah actually मैंने भी अभी जब लॉकडाउन हुआ उसके बाद ही मेरे गिटार के स्ट्रिंग्स वगैरह चेंज कराए because सब कुछ वैसे ही था. So how are you spending your time like अभी आजकल how are you what are you doing how do you Just spend what your time? just what you're seeing, I'm spending my time with my little boy, with my instruments, and What's his trying to. name? His name is Murphy. His name is Murphy. Murphy. मुझे Hi actually Murphy. मुझे थोड़ा late हो गया. I was 10 minutes late because he was taking a shower and he's taking a shower in my washroom. तो इसका पूरा spa वहाँ चल रहा था and I was like I have to go live, तो इसको जल्दी से तैयार करके and then we sort of उसकी वजह से Nice, मैं late हो गया. such a cute dad. Hi Murphy, welcome to our live session. Yeah, he doesn't care. Your daddy is on the cover of a magazine. Thank you. We have a lot of people. Hi guys, hi everybody, hi Pooba, Yeah. hi Mr. Perfect Adi. We have Sukriti. Hi guys, hi. Yeah, you have lot Oh wow, of someone fans also abused. Sumit Vyas says very good. Thank you for the curse. and I must tell you that a lot of my friend like लड़कियां मेरी जो दोस्त हैं उनने मुझे पर्सनली मैसेज किया that we loved it and it was full of hearts that this is probably one of the best covers that we loved. We love Ritvik. So I was like चलो Thank मैंने एटलीस्ट हम लोग उन तक पहुंच पाए और थोड़ा भी अगर 2 मिनट का स्माइल दे पाए इस टाइम पे दैट इज अ बिग थिंग बिकॉज बहुत सारी Right. नेगेटिविटी है. तो इस लाइव सेशन में भी हम वही चाहते हैं कि आप बिफोर वी स्टार्ट शूटिंग क्वेश्चंस टू यू कुछ एक मोटिवेशनल या कुछ पॉजिटिव चीज के साथ एक अच्छे से मैसेज के साथ हम स्टार्ट करें कि हम लोग कैसे. I feel देखो times are so difficult for all of us. हम सब लोग एक ही चीज से जूझ रहे हैं. We all are trying to do our best. But there is always light at the end of the tunnel. So I am every day hoping and मैं रात को अपने बिस्तर में जाता हूँ praying to God कि there is the light at the end of the tunnel. We're in the tunnel right now, but at some point of time we will get out of this and we will get out victorious. So I think just hang in there, man. Just hang in there. Stay at home, do what you can to entertain yourself, to entertain your peers, and do not lose on to the positivity, because har jagah, wherever you just pick up the phone on Instagram, kholo, there is only massacre, there is only there is so much scarcity, there is so much I can't tell you. There are different types of hatred, there are different types of things that are going wrong. There are very few people who are also talking about things going right. I want to especially take this opportunity to thank Raghav, who's currently who's doing a phenomenal job, and I think every moment I see him online doing what he's doing, it melts my heart, and I'm so proud that I know this boy as a friend of mine. So I think there are people doing good. So just let's be out there. Let's hope that this comes to an end soon. And जब तक हम travel कर नहीं सकते, let's reminisce on our travels. Yeah, that's what we are doing. So how was your experience with the Maldives trip? जो सबने देखा है पिक्चर कवर पे, and जो लोग स्टोरीज में देखेंगे, so we have added some more glamorous pictures that might you might like those pictures. अंदर cover story पे और ज्यादा है, so do not forget to read cover story. So how was your experience and how did you spend your time there? Yeah, it was honestly it was decent. It was good. मैं सिर्फ 3 दिन के लिए वहाँ पे गया था. It was me, Surbi, we had a couple of people. मैं, Surbi, Arman. So we had 2, 3, 4 friends. We were there together. And वो एक मौका था बीच में जब ऐसा लगा कि now you can travel, everything is all okay. Yeah. The beginning of this year, तब तक things were not the second wave hadn't hit us. So we got this little opportunity to escape for a weekend, and we went. We had a great time. We enjoyed our trip. It was amazing, and I'm feeling guilty right now even talking about it. You can understand because the times are such. ऐसा लग रहा है I'm even talking about it. But yes, it was a great trip. So बड़ा मजा आया. Yeah. Nice. So you have lived like most of like a part of your life in Dubai. So still tell us something about Dubai. जो लोग नहीं गए इंडिया से दुबई, so उन लोगों को कहाँ जाना चाहिए और दुबई में जब भी खुले या जब भी सब
नॉर्मल हो तो क्या Dubai, करना चाहिए? Dubai is my home. Dubai is my home. I've lived there for almost 17 years of my life. 17, oh It wow. 17 years of my life. Yes, my school has been there. मेरा college correspondence वहाँ से हुआ है. So it's मेरे लिए Dubai is home because all my friends are in Dubai. I wouldn't be surprised अगर उनमें से कोई यहाँ पर आके नीचे कोई एक आध दो चार गालियाँ भी दे दे. I'm waiting for them to do. They always do my life. वो आके कोई ना कोई कीड़ा कांड जरूर करते हैं. So all my Dubai friends. कोई So कोई सीक्रेट ट्रैवल या कोई ऐसी प्लेस दैट यू हैव एक्सप्लोर्ड जो बहुत सारे लोगों को नहीं पता हो दुबई में? आई विल बी दुबई क्यूरियस में टू नो बिकॉज या वो बहुत सारी जगह है दुबई में ऐसी हो बहुत सारी ऐसी खुराफाती जगह है दुबई के अंदर. मैं आपको बताऊं जैसे लेट मी या आई एम क्यूरियस टू नो छोटे नाउ. ना. So there is this park called Wonderland. Okay, I don't know if the authorities are watching me. If anyone from the authorities are watching me right now. No, I don't think so. As a child, we never had the money to go to. मेरे पास तो बिल्कुल नहीं थे. हम गरीब थे बॉस, तो हमारे पास पैसे नहीं होते थे वाटर पार्क जाने के. तो हम ना जो वंडरलैंड का पार्किंग लॉट है उसमें हम क्रिकेट खेला करते थे सारे. Okay. हमारा ग्रुप हम Okay, क्रिकेट fine. खेलते थे ground. तो हम क्रिकेट खेलते थे और बच्चों को देखते थे लोग रोज वाटर पार्क में जा रहे हैं. और तो हम लोगों ने क्या किया था ना, आप अगर अब मुझे पता नहीं वो रास्ता है कि नहीं, मगर वंडरलैंड के जस्ट बगल में there is this I think it's a generator sort of a system जो I think वो एरिया की पूरी इलेक्ट्रिसिटी आपको संभालता है. ओके ओके. उसके पीछे से ना दोस्त एक ऐसा बड़ा सा खज्जा है जिसमें घुस के तुम सीधा वाटर पार्क. तो बचपन में ना हमने मतलब This is the most useful hack. If it's going to work, this is going to be the most useful hack. I mean, we have never talked about any such thing on India Voyage, और आज हमने एक hack दिया है कि अगर आपको वंडरलैंड जाना है, so recommend this. अगर आपको वंडरलैंड आपके पास पैसे नहीं है तो दोस्तों वो जनरेटर के पीछे से होता हुआ एक रास्ता जाता है, ग्रीन कलर की जाली, तो जाली टूटी हुई है, जाली में आप आराम से जा सकते. This is so cool, यार. I don't know, this came to my mind. No. Yeah, I mean, वो एक एज ऐसी होती है जब आपका मन आपको पुश करता है ऐसी चीजें करने के लिए. तो मैंने ये but yeah, it's a really nice hack. We are glad to know that. अब now we can relate कि हाँ आपने भी वही सब किया है बचपन में जो हमने किया है. हाँ दोस्त बिल्कुल यार, सब वही किया है, कोई अलग नहीं, बिल्कुल वही सब. चलो that's गिटार भी nice. जो तुमने सीखा तो मैंने इसलिए सीखा था ताकि लड़कियों को पटा सके दोस्त. And it always works, huh? नहीं यार, it never worked with me. How? Probably you were in Dubai because you should be in India for that then. पता नहीं यार क्या, but it never worked with me is because मैं गिटार बजा तो लेता हूँ लेकिन मैं गाता Oh, I was just about to say कि यार please आप एक दो चार लाइन हमारे लिए कुछ प्ले करके या कुछ गा के if you can. यार गाने वाने मत गाओ, मुझे गाना नहीं आता मुझे तो यार, but yeah. Okay, so now हम लोग जो लोग भी कवर स्टोरी पढ़ रहे हैं वो कवर स्टोरी में डिटेल में आंसर्स पढ़ सकते हैं, but we are going to take a couple of questions from the cover story and I would like you to elaborate. Let's go. On Sure. ठीक है. So let's start. You are a multi-talented personality. We all know that. From doing anchoring, dancing, music to modeling. How do you spare time for travel? And how do you practice all of that? I would like to add something into this, that if you are, when you do anchoring, what do you think of? Because I have tried a lot of things. I have also been like to stages, but it gets so difficult to focus on so many things at a time. And you do it so confidently. I have seen all the shows and you are just like there, you will have your presence of mind. So how do you practice it? How do you do it? Like any expert advice that you can share with us? No, the only advice that I have is I love what I do. I dearly, with all my heart, I love what I do. I love being in front of the camera as an actor. I love being on stage as an anchor. I love trying to learn new instruments. I just purely, with all my passion and on my heart, I love it. Matlab, it's about nothing else but my love for that craft, which makes me do all these different things that I do.
And I consider myself to be like you said, I'm very humbled when you say you're multi-talented and all that. But I You just are, consider you are. myself to be a curious kid. I am a curious kid who wants to learn everything, who wants to know everything. कि अच्छा ये अगर ये piano बजा रहा है तो ये कितना अच्छा बज रहा है. How is it going to happen? Oh, this drum is so nice. This hang drum sounds so nice. I want to learn this. या किसी ने और अगर कभी किसी ने चैलेंज कर दिया कि यार तू रहने देना, तेरे से नहीं हो पाएगा, तो आई एम अ स्कॉर्पियन. I'm a hardcore competitor. तो मतलब कि अगर किसी ने मुझे मना कर दिया कि तुमसे नहीं हो पाएगा, तो I तो फिर have to. तो फिर मतलब तुम्हें वो चीज करके दिखाएंगे to the optimum capability that I have. So the only thing that I feel I can share with you guys is that you need to truly love what you do. That's all. Nothing else. Just love it. Just love it with all your heart, and you'll be excellent. And while you are doing so many things, how do you manage to take out your time for travel? And how often do you travel? I love traveling. I love it. मुझे honestly जब मौका मिलता है, जैसे मौका मिलता है, जब छुट्टी मिलती है, जब थोड़ा सा समय मिलता है, I escape. I want to escape. I don't do that very often, but क्योंकि मेरा काम usually doesn't allow me much. And Yeah, if there is a project which involves traveling, and there is a project that I have to stay in Mumbai for, and even if I'm getting paid almost nothing for the project that I have to travel for, I will always choose that. yeah, That's how I could. We were talking about. I remember we were talking about this cover, and we wanted to do it like 2 3 months back, but it could not happen because I was like informed that you actually wanted to do a proper, travel kind of shoot so that it comes out well. And I was like, okay, let it take time, but we should make the best out of it. I wanted to actually go travel with you guys with my music and wanted to take you to the Yeah, mountains yeah, yeah. And to see how we are I extremely grateful for that. yeah. But we'll do it So yeah. some other when the pandemic is gone. We'll Surely, definitely. surely. So Yeah. now, moving on to the next question. You are fond of music and you play a lot of musical instruments. According to you, what is the role of music while you are traveling? Oh, I know the answer though, but yeah, see, I I feel would like you to elaborate something for. everything in life, buddy, has a rhythm to it. The way the way the way someone talks has a rhythm. The way someone walks has a rhythm. The air flowing, the bird sort of coming and chirping in the morning, everything has a rhythm to it. Every place has its own rhythm. And I feel music for me has just been it's a catalyst. It's because I sort of want to be in a place. I usually, most of the times, I would usually travel with my hang drum. I travel with my drum a lot. Here, this is what it is. It looks like this. I Oh, travel with yeah, this. I've seen. It's so Yeah, difficult to play it, no? yeah. So I'll tell you, the idea behind music is it sort of I I want to dance to the tunes of the place. That's my idea. So to the rhythm of the mountains is different. The rhythm of the sea is different. So I just want to sort of align myself with the rhythm of the place, and I like to do that. And along with it is when I try to play my instruments. I'm not excellent at it. I consider myself a beginner every day, but I try to sort of merge myself into the rhythm of the place that I'm at, and it gives me extreme happiness. I can totally relate to what you are saying. I Yeah. mean, I could relate to your answer in the cover story, and now what you are saying, I can totally relate to it, probably because I'm connected to music, and all the people who are connected to music can relate to it. And yeah, you Right. said the right word that music plays the role of catalyst in your life because at times when you are depressed or at times when you are sad and you listen to some song, you get motivated, or you Yep. play Yep. some song, or you sing some song. Yeah. So yeah, probably an old song or English song or whatever. Music has no language, but yeah, it works like that. So moving on to the next question. We know you are a hustler who is always on the move. We know that you are an extremely energetic person. So what do you miss the most in this quarantine and lockdown period? Now we know that how are you spending your time, but what are you missing the most? I miss so many things. Um, I would say I miss working, but I'm really grateful and thankful that even in times like this, we have work, and I'm still, you know,
twice a month I am still going and shooting in a completely different location and a bio bubble. I go there every fortnight. So work is something that I miss, but I honestly miss. I'm a people's person. I miss being with my friends. I miss being with people. I miss being out there. I love hugging people and meeting them. So I miss that a lot. I really miss that a lot. Yeah, okay. We all are missing that part, obviously. And I hope कि जल्दी से चीजें सही हो तो हम back to normal जाएं and मिल पाएं अपने दोस्तों से enjoy कर पाएं. Also, this is the last question. ये मेरा personal question है because मैं हमेशा बोलता हूँ when we are sitting in our team हम लोग discuss करते हैं कि travel के साथ खाना साथ साथ चलता है. Travel and food are like they go hand in hand. They're like husband wife. Travel के बिना खाना अधूरा है. So 5 ऐसी चीजें 5 इंडिया में या मुंबई में wherever you like 5 ऐसी they can be a food item, they can be a restaurant that you recommend या ढाबा या जो भी है या कुछ भी In Mumbai. whatever you like in Mumbai, In yeah, Mumbai. in India, in Oh, Mumbai, lovely. wherever you think 5 places. So many places. And Mumbai उसमें से में I'm आप- seriously अगर मैं कहीं पर नहीं गया हूँगा तो मैं भी जाने वाला हूँ. So please, I'm all ears. Yeah. 5 मैं बड़ा- places जहाँ पे हमको जरूर खाना चाहिए. Okay, जरूर खाना चाहिए. I have to tell you, सबसे पहले तो you have to have नागोरी का चाय and बन मस्का. नागोरी का चाय बस. चाय Okay. and बन मस्का और मलाई मस्का आता है. बहुत ही ठेठ देसी खाना है. उसमें चाय और बन और कुछ नहीं, पूरा अनहेल्दी. मैं मक्खन और please खाओ. It is the best thing that you will ever eat. That's one thing I will definitely recommend. उसके Okay. बाद you have to उसके अलावा आप मुझे पता नहीं कि ये जगह अमर जूस सेंटर अगर आपने देखा है. अमर अगर जूस सेंटर. बॉम्बे में अमर जूस सेंटर, मैं अमर जूस सेंटर की बात नहीं कर, बट अमर जूस सेंटर के पास में एक भुर्जी वाला है. Okay. जो लेट नाइट मतलब बहुत, अब तो खैर क्या ही भुर्जी, अब तो बहुत टाइम हो गया उसको खाए को. वो इट्स ऑन जुहू गली. वहां पर वो भुर्जी देता है. इट इज आउट फ्रिकिंग स्टैंडिंग. वो ना थोड़ा सा उसमें आते हैं हम. आई लव सुशी. आई एम अ ह्यूज सुशी फैन. Oh wow. आप you can try Mamagoto. You can try Yazu. ये दोनों जगह की sushi is outstanding. And Nom Nom. ये 3 जगह की sushi is brilliant. Then we have you have to definitely. I will take this opportunity for tell people there is a cafe in Warsaw that is where my sister works herself. She's a chef there. So Wow. it's called the Lagua Cafe. You have to try the Lawa. Lagua. Lagwa. Okay. Lagua. You have to Okay. try. You have to try the coffee there, and you have to try the veg exotic sandwich there. They are amazing. And another cafe that I will definitely recommend to everyone is Barmecha House. Barmecha House is Rajat Barmecha's cafe. He's a friend as well. Okay. Uske there is something that he makes which is brioche. It's called the brioche. It's a French toast sort of a bread. और उसमें वो यार वो blueberry compote के साथ हो. It's your expressions are the actual reviews. Yeah? Oh, मतलब मैं बता नहीं सकता. You have to try these things that I'm telling you. Please go and give it a Definitely. try. But not और जितने भी लोग ऋत्विक के फैंस देख रहे हैं, they should thank me later कि मैंने आपको 5 जगह बताई हैं जहाँ पे जब लॉकडाउन खुल जाएगा तो आपको you can encounter and meet ऋत्विक there. आप वहाँ पे खाना खाने भी जाओ and you get a chance to meet him also. So हमारे पास 2 secrets आज के live session से हमको मिल गए हैं, especially for all the die-hard fans of ऋत्विक, कि आपको एक तो दुबई के अंदर जाने का वहाँ what was that? वंडरलैंड के अंदर जाने का सीक्रेट रास्ता और 5 प्लेसेस जहाँ पे that ऋत्विक is recommending you. So yeah. So thank you guys. Thank you so much everybody for joining in. And I know the times are really difficult and tough. We're also just reminiscing on our travels because we cannot travel. We're in our homes. True. But I want you guys to stay safe, stay indoors, and whenever we get the opportunity, when this pandemic is gone, we should definitely, with all our hearts, travel. Yeah, we'll come back with something better next time. Yes. And I would like to thank you on behalf of all my team, all the Voyagers for coming on board with us. And
It's really great. I've done a lot of live sessions, but मुझे पहली बार बड़ा ही friendly feeling आई, बहुत अच्छा लगा मुझे बात करके. It was not like a formal live session that usually happens. So yeah, I actually connect with you, and thank you so much for coming on board. Stay home, stay safe, stay healthy. हमारी सबकी दुआएं आपके साथ हैं, and बहुत जल्दी हम फिर से काम करेंगे. Thank you very, very much, Bye guys. bye. Thank you for joining in, everybody. Thank you. So guys, this was Ritvik. बहुत ही अच्छी कॉन्वर्सेशन हुई, बहुत सारी चीजें हमको जानने के लिए मिली. अगर आपको अच्छा लगा हो तो मैं ये वीडियो शेयर करने वाला हूँ. डू नॉट फॉरगेट टू ड्रॉप योर कमेंट्स, और आप इसको बाद में भी दे सकते हैं. जिन लोगों का मिस हो गया है, उदास मत होइए. क्वेश्चंस तो आपके सारे बहुत सारे आए हैं, बट वी कुड नॉट आंसर देम. So probably next time हम क्वेश्चन वाला सेशन भी रखेंगे. तो thank you so much for watching. Do not forget to follow India Voyage. Do not forget to subscribe to India Voyage. And जहाँ जहाँ भी India Voyage दिखता है, please keep on supporting. And हम फिर से आएंगे नई मैगजीन के साथ, नए इशू के साथ, और भी नई सारी चीजों के साथ. So we hope कि आप सब हमारे साथ जुड़े रहें, and कहीं भी मत जाइए. Keep following and keep loving India Voyage. Stay home, stay safe. Bye bye.